ये वीडियो है इट्स मोर अबाउट टू कोर्सेज। शेरिडन कॉलेज का केमिकल लैब टेक्नीशियन जो कि 2 साल का है, और 3 ईयर वाला प्रोग्राम है जो कि केमिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, जिसमें हम दोनों हैं। हाउ इज द मार्किंग इन शेरिडन? मार्किंग, I'm not talking about other course. Let's talk about the chemical chemistry engineering lab technician. फ्यूचर के लिए तैयार किया जाता है इस कोर्स में। आप आए भी अगर आप कोर्स चूज करो तो आप ये देख के आना कि ये इसी तरह का कोर्स है जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ग्रिल किया जाएगा, जस्ट कि आप इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स और सब कुछ को ध्यान में रखते हुए यू कैन गो थ्रू दिस कोर्स और पास कर जाओ। So chemicals are everywhere, I would say. So I don't think in the coming years as well the demand for the course will reduce. हर चीज़ में केमिकल है, आने वाले टाइम में ये कोर्स की डिमांड हमेशा रहने वाली है। जॉब्स बहुत सारे हैं इस इंडस्ट्री में, बस आपको क्रैक करना है, राइट? हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विक्रम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एजुकेशन सीरीज़। तो आज की वीडियो काफ़ी डिमांड में है बिकॉज इट्स अ केमिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी प्रोग्राम फ्रॉम द शेरिडन कॉलेज। काफ़ी मतलब मेरे पास डीएम्स वगैरह आए थे। आई वोंट से दैट कि मेरे पास बहुत सारे डीएम आए थे, बट लाइक या सो दिस कोर्स इज़ इन डिमांड इन शेरिडन कॉलेज। और मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं शेरिडन कॉलेज में, दे आर मोर इनटू द केमिकल इंजीनियरिंग। लैब टेक्नीशियन इज़ 2 years course and 3 years course is chemical engineering technology. Personally, I'm in 3 years course which provides the co-op as well. Today I'm with one of the guests. Her name is Ritika. She's also in 3 years program, but she's like a senior to me, right? She has already finished her co-op, जबकि मैंने अपना co-op अभी start किया है. She will be going into the 6th semester coming this summer, and I have just finished the 4th semester of that. Pretty much थोड़ा मतलब कि थोड़ा सेम रहता है लैब टेक्नीशियन एंड इंजीनियरिंग। सम ऑफ द मॉड्यूल्स आर डिफरेंट फ्रॉम द लैब टेक्नीशियन एंड द इंजीनियरिंग मॉड्यूल्स, लाइक थोड़े बहुत डिफरेंट रहते हैं, बट विल टॉक अबाउट दिस कोर्स इन डिटेल। one experience of finishing just 2 years, I can tell you the difference, and with another experience जो कि she has already seen the engineering part of this course as well, although I was into the applied science more. तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे। मेरे प्रोस्पेक्ट क्या है ये भी बात करेंगे, बट विल टॉक मोर अबाउट द 3rd years प्रोस्पेक्ट कि जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, बट इसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या फ़ायदे हैं, कोर्स कितने का साल का करना चाहिए, लैब टेक्नीशियन इंजीनियरिंग, सब कुछ बात करेंगे इस कोर्स में। हम वेटिंग फॉर रितिका। शी जस्ट अपना उसका पीयर मेंटर का इन कैंपस जॉब है, आई थिंक शी इज़ डूइंग दैट, एंड again same, I'm in the library, you can see that I have booked this room, and I mean in this library you will find everything. You can see that you have a television access as well. आप यहाँ पे like group study कर सकते हो. You have given access of the chairs as well. So yeah, we'll talk more about this in the video. Alright, so finally I'm with Ritika. She is in chemical engineering technology 3 years program, which includes a co-op of 3 co-ops, 4 months each, but this is only for this time. From next time onwards it's going to change. Then it's going to be like after 2 years you will have full 1 year to do the co-op. So that's the details of the course, but we'll not start with that. We'll start, first of all we'll start मैं रितिका के इंट्रोडक्शन से बात करता हूँ, like कि आपका कोर्स कौन सा था, like how you ended up taking this course, Sheridan, Brampton, those basic questions, you know what I mean? Yeah. Okay. So I am Ritika, as Vikram introduced me. Yes. I am doing chemical engineering technology program, which is a 3-year program. And as if I talk about my background, I did bachelor's of science. It was a general science, so I had like physics, chemistry and mathematics as my major courses, and I completed that course from Punjab University, Chandigarh. And when I tried to look for the courses further here, so I was looking for something more related to what I did back in India. So when I looking for courses, I saw this course that was most compatible with what I did back home.
So, and I was also interested in more hands-on experience. That's why I chose this program. And after I am almost at the end of my course, so I have one more 6 semesters to go. Yeah, It's too much. कुछ lucky लोगों के लिए होता है, वरना I mean, why I'm talking this because you know हम बात करते रहते हैं प्रोफेसर से, so वो लोग बताते हैं कि you know सेमेस्टर 5-6 में जो नए ड्रीम्स आप लोगों को आने वाले हैं, so उसकी वजह से like एक जो हर्डल होता है वो मेरे लिए आना बाकी है, but for her it's already done, like she's halfway done. Actually, like before moving forward, मैं एक बात बताता हूँ, like we were in the same class during the COVID, but due to the visa delay, which I got a visa delay, so that's why I took a defer और मैं सितंबर में आया था, you know, because I knew her from that time, तो मैं पूछता रहता हूँ कि कोर्स के बारे में क्या है. So आज हम यही सब बातें कैमरा के आगे करने वाले हैं, and we'll talk more about you know who should choose this course. What's the level of difficulty of this course, right? You know कि कितना टफ है, कितना टाइम मिलेगा आपको अपने लिए, जो कि कभी नहीं मिलता है. That's true. We'll talk more about this. Job manage किया, like as you can see अभी she just came from peer mentor, like a on campus job है. So हम इसके बारे में बात करेंगे. So I'll ask my first question. अब हम अपना मेन वीडियो का पार्ट शुरू करते हैं. So जो ये वीडियो है, it's more about 2 courses. शेरिडन कॉलेज का केमिकल लैब टेक्नीशियन जो कि 2 साल का है, और 3 ईयर वाला प्रोग्राम है जो कि केमिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, जिसमें हम दोनों हैं. बट जस्ट फर्क ये है कि शी इज़ 1 ईयर अहेड, जो कि मैंने अपने इंट्रोडक्शन में भी बता दिया था पहले. तो यू ऑलरेडी डिड कोऑप, राइट? कोऑप कर लिया है. मैं कोऑप कर रहा हूँ, मेरा जस्ट सेकंड वीक है. सो आई एम नॉट गेटिंग टूवर्ड्स द हाउ टू गेट द कोऑप. दैट्स यू नो वेरी डिफरेंट टॉपिक. विल कवर दिस टॉपिक लेटर ऑन. बट स्टार्ट करते हैं वेरी बेसिक से. कोई व्हाट्स द रिक्वायरमेंट, व्हाट डू यू थिंक कि इस कोर्स के लिए क्या एक रिक्वायरमेंट होनी चाहिए? कि फर्स्ट ऑफ ऑल दिस कोर्स इज 3 years, 1 is एडवांस डिप्लोमा एंड 2 years, 1 is डिप्लोमा कोर्स, राइट? सो व्हाट डू यू थिंक कि IELTS 6.5 कितने आए थे आपके? Yeah, mine was 6.5. See, exactly 6.5. कुछ नहीं चाहिए, पैसा चाहिए खाते में, फीस भरी होनी चाहिए. That's it, right? Yeah. और फी की अगर हम बात करें, how much you paid fees? So it's like yearly estimation, like Indian rupees में अगर if you can tell, around like 9-10, what do you 9 say? to 10. 9 to 10. Yeah, same, like 9 to 10. And how you are managing your tuition fee? Did you ask your parents, like parents को बोला, या फिर like you already paid yourself just after, मतलब पहले साल की बात, जो भी second और third year की fee भी you almost paid, right? तो कैसे किया? Did you do it yourself? I do it myself because here you become independent, more independent. So you just do some part-time jobs and you try to manage everything by yourself. See, this is second example. The first example itself here, you don't need parent support after coming here. If you just even you are doing 20 hours per week, right? So yeah, it depends ki what's your goal, what's your end goal, right? You know how much you keep yourself you know focused towards the goal. What do you say about this? Is it right? Yeah, it's right. And I also like got help from the scholarship provided by the college. Yes, toppers. So whatever she will talk about the academics, it will be 100% correct information because she is the topper of her batch. Am I right? Yeah. Okay, next question बहुत important है. You know what, मेरे YouTube कमेंट सेक्शन में बहुत लोगों का ये क्वेश्चन है, राइट? लिटरली कि शेरिडन कॉलेज में एप्लीकेशन प्रोसेस होने का टाइम कितना है, लाइक आफ्टर सबमिटिंग द एप्लीकेशन फॉर्म टिल द टाइम गेटिंग द एक्सेप्टेंस फ्रॉम द कॉलेज, हाउ मच टाइम इट टुक यू? और एस्टिमेटेड टाइम, लाइक कितना टाइम लगा फ्रॉम द जर्नी फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म भरने से टिल द टाइम की वीजा? ऑफ कोर्स लाइक आपका कोविड के टाइम पे था, जस्ट टू लेट यू ऑल नो दैट शी डिड इट ड्यूरिंग द कोविड टाइम, बट नाउअडेज लाइक इट्स लिटिल फास्टर. बट लाइक आई वांट टू नो हर एक्सपीरियंस, लाइक हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? तो कैसा था? For me it was COVID time obviously, so it was like taking 2 to 3 months. When we fill the form and we get the reply from the college. Kitna? It's like 2 to 3 months. 2 to 3 months. And did it you? was a lot. Yeah. So you are into the peer mentor, and you know you talk a lot with the students. So अभी कितना time? Like right now कितना time चल रहा है अभी? I guess it's
15 days to 1 month. 15 days to 1 month. So Yeah. roughly estimate कह सकते हैं like 20 plus days. Yeah. You know, we can say that 20 plus days जिनका ये question रहता है कि Sheridan College से कितना time लगता है application आने के लिए, उसका 20 plus days. So next question is कि why Sheridan? Like why Brampton? मैंने शायद ये repeat किया, but I think वो उस time पे बात पे question वो हो नहीं पाया एक answer, क्योंकि बहुत सारे question मैंने एक साथ पूछ लिए थे. So why Brampton? Why Sheridan? Like is something related with this college particular, और कुछ ऐसा था कि जिसकी वजह से आपने ये choose किया? Yeah, particularly why Sheridan? Because one of my cousin, he graduated from the same program. Oh, and same program, working, 3-year one. 3-year one. And he's placed in a company, and he's working in an oil company, petroleum. In Ontario or any other province? In Ontario. In Ontario itself. Amazing. So that says, I also say this course has potential to land up you with a very good job. Roughly annual package कितना है उस job का? Just roughly package. I don't want exact figures. Like for him, yeah. For him, it's like 80 to 90,000. Amazing. See this course. Because he is experienced as well. As you go more, as you get more experience, you get higher pay, obviously. सही बात है. Okay. So yeah, so that means कि हम ये कह सकते हैं कि इस कोर्स के एक पोटेंशियल है कि एक अच्छी जॉब लैंड करा दें. हम इसके बारे में बात करते हैं कोर्स में आगे बढ़ते हुए, राइट? हम जो केमिकल जो कोर्स के बारे में आज हम बात कर रहे हैं उसको 2 मिनट थोड़ा सा साइड करते हैं, और हम बात करते हैं रिगार्डिंग द ऑन कैंपस जॉब और प्लस ऑफ कैंपस जॉब नियर शेरिडन, जो कि बहुत एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है. स्टूडेंट के माइंड में रहता है कि ये कोर्स चूज करने से पहले हमें इसके बारे में भी पता कर लेना चाहिए, राइट? तो व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? लाइक हाउ टफ और हाउ डिफिकल्ट, कितना टफ था फॉर यू टू गेट ऑन कैंपस जॉब, और इफ यू आर डूइंग एनी जॉब आउटसाइड द कैंपस एज वेल? I would say for on-campus job, it's quite easy. So when I was in second semester, so I applied. So I applied for a tutoring job first, and I get into it, and they took my interview. Have to go through some procedures, and after that I applied for peer mentor's job when I was in my third semester. And it's an easy interview for peer mentor job, and it's not like you should meet some specific qualifications. It is specifically उन लोगों के लिए है, like who are doing some diploma or degree on Sheridan campus. अच्छा. Yeah. So मैं एक hint दे देता हूँ. Peer mentor, right? Peer mentor is like you as a student guide other student. तो मैंने जितना देखा है peer mentors को, they help student, कोई भी information चाहिए होती है, you can go to them, you can ask them. तो this sort of job. And how was the pay? Basic minimum pay rate? Yeah, it's a basic. How many hours they give? Like, so for peer mentor, it's like maximum 10. 10. Okay, 10 hours, not bad. Ontario का मिनिमम पे रेट अक्टूबर से बढ़ने वाला है. Congratulations guys. 1685 होने वाला है, and that's again a hike in the price, but of course this study is expensive. But still, yeah, I mean, थोड़ा सा अब आप प्रोग्राम के बारे में बात कर लेते हैं. How much tough it is, like in terms of not a brilliant mind like you, like a medium mind like me. कितना टाइम इसको मतलब एक्चुअल में मुझे स्पेंड करना पड़ेगा इस कोर्स के लिए. लेट्स टॉक इनिशियली अबाउट फर्स्ट 2 साल, जो कि फर्स्ट 2 ईयर्स के प्रोग्राम थे, जो कि केमिकल लैब टेक्नीशियन और केमिकल इंजीनियरिंग दोनों के लिए सेम होते हैं, एक्सेप्ट 1 और 2 कोर्स थोड़े से डिफरेंट होते हैं. जैसे कि कैलकुलस आया था 3 जो 3 ईयर प्रोग्राम में होते हैं, उनके प्रोग्राम में हार्डकोर कैलकुलस जुड़ जाती है. ऑल्दो उनके में भी होता है, पर उनका थोड़ा छोटा कर देते हैं मॉड्यूल. हमें डिफरेंशियल एक सेमेस्टर में पढ़ना पड़ता है, इंटीग्रल अलग में. तो व्हाट दे डू, दे जस्ट सम अप बोथ, और वो एक ही टर्म में कर देते हैं. तो कुछ मॉड्यूल्स अलग होते हैं, दैट्स इट. बट इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल 2 इयर्स पर्सपेक्टिव, व्हाट डू यू थिंक कि कितना टफ है ये? Frankly speaking, it's not like so much tough for the first 2 semesters especially. It's like so basic things they teach you, and अगर आप इंडिया से कोई डिग्री करके आ रहे हो, then it's so super easy, like first 2 semesters. That's true. If you are coming after 12th,
it's easy because it's like mole concepts Mhm. in applied chemistry, and there is basic mathematics, some unit conversions, some things like that. Mhm. Although I know method is a little bit different, Different, yes. but if you learn that, it's easy. Like first 2 semester, if I talk about third and fourth semester, so there is a little bit change when you go from second semester to third semester. But when you are like good with that semester, I won't say it's tough. Mhm. It's different. Different, yes, So that's it's true. a change. Mhm. So when you go to third semester, it's a little change. But when you get used to third one, then fourth one is easy for you. yes. मैं इस बात को समराइज करना थोड़ा सा चाहता हूँ। जैसे फर्स्ट टू सेमेस्टर एक्चुअली जो है वो मेजरली आपके बेसिक्स हैं, आपके 12th का सारा ब्रश अप कर देते हैं वो लोग। प्लस कुछ थोड़ा सा अलग रहता है, जैसे कि आप बताया कि मोल कॉन्सेप्ट, स्टोइक्योमेट्री, जो मतलब साइंस साइड्स हैं वो इस बात को रिलेट कर पा रहे होंगे इसको, इस 2-3 शब्द जो मैंने बोले अभी थोड़ी देर पहले। यहाँ इंडिया में क्या होता है कि वी डू स्टेप वाइज, राइट? हमें हर चीज में अब मोल निकालना है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल गिवन मास, मोलर मास, व्हाटएवर, राइट? यहाँ पे क्या होता है कि दे प्रेफर डूइंग इट वन स्टेप, एक ही स्टेप में करते हैं, जो कि पर्सनली जो सीबीएसई जो इंडियन बोर्ड से पढ़ा हुआ है उसके लिए इट फील्स लाइक Easy. नहीं, इजी तो होता है बट इनिशियली लगता है कि कि एक लाइन में कैसे हो सकता है। ऑल्दो ये बात वो लोग रिलेट कर पाएंगे जिन्होंने जेई की तैयारी करी हुई है, क्योंकि जेई की तैयारी में जो टिप्स एंड ट्रिक्स जो सिखाते हैं उसमें वन स्टेप में ही सिखाते हैं, बिकॉज वो लोग रिलेट कर पाएंगे इस बात को। तो इट्स नॉट टफ टू बी ऑनेस्ट। अब आते हैं हम थर्ड सेमेस्टर में हमारे पास आते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन, जो कि एक्चुअल में केमिस्ट्री में जैसे कि हम सुनते हैं ना कि सॉल्ट कितना है, राइट? बेसिक एग्जांपल स्टैंडर्डाइज सोडियम हाइड्रोक्साइड, राइट? जो साइंस है वही रिलेट कर पाएंगे इस बात को। आप स्किप कर सकते हो इफ यू आर नॉन साइंस बैकग्राउंड दिस पोर्शन। तो ये सब चीजें है ना, लाइक वी गेट जस्ट इन 11th-12th क्या होता था कि एक एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट होता था हमारे पास, बट यहाँ पे हमें वो परफॉर्म करने होते हैं। प्लस यहाँ पे बहुत ही लाइक हाईटेक इंस्ट्रूमेंट है, जैसे कि वो HPLC सॉरी GC HPLC। So they gives you a hands-on experience, literally hands-on experience. Like they will tell you each and everything, right? Yes. If I'm wrong, just interrupt me. Yeah, no. सही बात है ये? Yeah, they give you a whole SOP. You go through each and every step, and then you use the instrument. How's the marking in Sheridan? Marking, I'm not talking about other course. Let's talk about the chemistry, engineering, lab technician. Marking scheme कैसा है? क्या पास होना easy है in terms of labs and theory, In terms of lab, if you have to do lab reports, obviously that's a big change for me as well. So आपको learn करना होगा how to go step by step, how to you have to work according to professor's expectations. प्रोफेसर एक्सपेक्टेशन, उनकी प्रोफेसर की एक्सपेक्टेशन यही होती है कि आप प्रोफेशनली काम करो, जो आप जॉब में जाके कल करने वाले हो वही आपको यहाँ से सिखाया जाता है। इट्स नॉट अप्लाइड साइंस कोर्स, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस प्लस साइंस, अप्लाइड साइंस का एक कोर्स है ये। तो दे एक्सपेक्ट कि आप सारी चीजें इंडस्ट्री के हिसाब से आप इसको फॉलो करो, राइट? ये दिस इज ट्रू, राइट? तो टीचर बहुत कोई टीचर होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं, जो नेग्लेक्ट कर देते हैं, बट कोई टीचर होते हैं जो लाइक डेसिमल पॉइंट्स पे भी नंबर काटते हैं। तो मेरे साथ बड़े गंदे एक्सपीरियंस हुए हैं ऐसे टीचर्स के। तो हाउ इज योर एक्सपीरियंस लाइक इन टर्म्स ऑफ गेटिंग मार्क्स? It's been good, but sometimes if you forget to do decimal things, decimals, and that hurts, right? That hurts. very much hurts because उनका कहना है कि एक गलती पे 0.5 मार्क्स, राइट? ऐसे कुछ सिस्टम है इन लोगों का। तो 6 गलती भी हुई तो 3-4 नंबर ऐसे ही चले गए, राइट? ऐसे कुछ रहता है। Yeah, there is a logic for that, because if you work in pharmaceutical company and you have to put salt like 25.5% or 50%, right? So if you do mistake there, then you will the whole batch of that medicine, you can't use that. So कहने का मतलब ये है कि आपको
फ्यूचर के लिए तैयार किया जाता है इस कोर्स में। आप आगे भी अगर आप कोर्स चूज करो तो आप ये देख के आना कि ये इसी तरह का कोर्स है जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ग्रिल किया जाएगा, जस्ट कि आप इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स और सब कुछ को ध्यान में रखते हुए यू कैन गो थ्रू दिस कोर्स और पास कर जाओ। तो व्हाट डू यू थिंक, गुड कोर्स, बैड कोर्स? Yeah, according to me, it's a good course if you want to work in pharmaceutical, any chemical, petroleum, brick yeah, industry. Yeah, brick industry. Yes. Yes, obviously. So it's a good in food industry as well. Yeah, food industry as so well. chemicals are everywhere, I would Everywhere, say. yeah. So I don't think in the coming years as well the demand for the course will reduce. Yes, that's so true. हर चीज केमिकल है, even from what you get for your lunch box, tiffin box, it's also made up of some kind of chemical, right? Yeah, so plastic industry, plastic I forgot, industry, तो हर चीज़ में केमिकल है। आने वाले टाइम में ये कोर्स की डिमांड हमेशा रहने वाली है। जॉब्स बहुत सारे हैं इस इंडस्ट्री में, बस आपको क्रैक करना है, राइट? हमारे बैच में मैंने एक प्रोफेसर से बात की थी, प्रोफेसर नैंसी, लाइक शी इज इंस्ट्रूमेंटेशन, लाइक शी टीचेस अस इंस्ट्रूमेंटल केमिस्ट्री एक्चुअली। तो एक्चुअली कि मेरे जो फाइनल ईयर है, मैंने लास्ट ईयर बात हुई थी मेरी उनसे, उन्होंने कहा कि जो मेरे फाइनल ईयर के बच्चे हैं उन हर किसी के पास 2 से 3 या 1 जॉब तो मिनिमम सबके पास है ही, राइट? तो इनिशियली यस, आपको हर फील्ड में जाके यू हैव टू वर्क अ लॉट, उसके बाद आपकी एक्सपीरियंस के साथ पे बढ़ता है, एवरीथिंग हैपेंस स्लोली। बट अगर कोई सो व्हाट डू यू थिंक कि पीआर लेके आने के लिए क्या ये कोर्स है? पीआर वाले बंदों के लिए क्या ये वो कोर्स है? Yes, so I recently got discovered that the 3-year program, so they are giving more peer, like the points we give it for peer, they're giving more points to Yes, 3-year program. that's true. If you choose this program, you will get a points which is equivalent to the masters, right? Extra points जो मिलते हैं, actually मैंने भी थोड़ा बहुत इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा था, so you get points equivalent to the masters। और plus आपको okay, let's talk about co-op. How much difficult, tough, easy for you to find a co-op, and where you did your co-op actually? So there are I will start with there are 3 options for the co-op in the whole 3-year program. So for the first one, it's little bit tough to get into a co-op, but the co-op office they help you a lot. Like they are like behind your back. That's always true. Yeah, and then I got placed into co-op job. So I did co-op job on campus in the lab. See, when I was in semester 4, she was a lab technician as a co-op, intern, student intern, right? तो किसी के स्टूडेंट को नहीं जाना बाहर, नहीं करना, मेरे को कॉलेज पे आ रहा है, उसके लिए कॉलेज हेल्प कर रहा है, बस आपको इंटरव्यू क्रैक करना है, राइट? एंड विंटर्स में तो बहुत सारी जॉब्स निकलती हैं, समर में थोड़ी कम निकलती हैं इन टर्म्स ऑफ लैब, क्योंकि समर में सारे बहुत कम कोर्सेज चलते हैं इसीलिए। सो इफ यू थिंक 3 इयर्स प्रोग्राम में आके आपको कोऑप चाहिए तो कैंपस में भी बहुत सारे जॉब है, और कैंपस में बहुत सारे रिसर्च प्रोजेक्ट निकलते रहते हैं। बड़ा गहरा नाता है हमारा इन रिसर्च प्रोजेक्ट से, तो विल टॉक अबाउट दीज थिंग्स लेटर ऑन। दीज आर द अपॉर्चुनिटीज ऑन कैंपस जो कि कह सकते हैं मैंने ग्रैब की थी। आई वाज अ रिसर्च इंटर्न। क्या है क्या नहीं है, विल नॉट टॉक इन दिस वीडियो, सो विल मूव फॉरवर्ड। हम आगे बढ़ते हैं वीडियो को, लाइक काफ़ी लंबी हो चुकी है ऑलमोस्ट ये वीडियो, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। मेरा ये कहना है कि जो इस कोर्स को आप व्हाट डू यू थिंक कि ये कोर्स लाइक ऐसे हंसते खेलते तो नहीं होने वाला, राइट? जो ये सोच के आएगी जिसको पीआर लेने के लिए आना है, आके नहीं पढ़ना है, दे डोंट वांट टू स्टडी, दिस कोर्स इज नॉट फॉर दोज पीपल। व्हाट डू यू थिंक? यू हैव टू स्पेंड टाइम, यू हैव टू डेडिकेटेडली, बहुत ही स्पिरिचुअली पढ़ना पड़ेगा इस कोर्स को, आई वुड से, क्योंकि फॉर दिस इज नॉट फॉर दोज पीपल, राइट? तो what do you think, कितना पढ़ना पड़ता है? So it's like it depends on your skills as well. If you already know some of the things, you just have to go and review those. So it won't take much time. But if you are like totally new, of course जो 12th के बाद आ रहे हैं उनके लिए year 1 में भी easy हो सकता है, but year 2 is everything a different world. Let's talk about year 3. How is year 3? Is it an entire different planet, or it's a It is. It's because in the 3rd year they give you engineering courses. Engineering courses, what do you mean by engineering courses? So it's like, until like 2 years you are doing chemistry on that scale,
right? Mm-hmm. But when you move to year 3, so engineering scale means a bigger scale. Mm-hmm. So we have engineering labs in Sheridan. Mm-hmm. So everything moved to the bigger scale. So you will study about that. As in ki, industrial application के Yeah. तरीके से. Okay. Yeah. Makes sense. I personally seen those instruments. A basic example. Yeah, Remember climbing bomb? film? Yeah. Oh, Yeah. no, the bomb calorimeter. calorimeter, yeah. So we have heard about this, right? Bomb calorimeter कोई चीज होती है. But I mean, I was in the lab development program. She was intern there. So we from scratch we made that bomb calorimeter. So that's kind of experience I'm talking about when you talk about the year 3 engineering perspective of this course. So अगर मेरा I don't know like how you advise, but मेरी advice like I'll ask your point of view. But मेरा POV ये है कि अगर आपको engineering BSc engineering type जो courses होते हैं Bachelor of Applied Science in Engineering, उसके लिए ये बहुत अच्छा course है. I won't say BTech, but देर आर पाथवेज, राइट? हम इसके बाद हम पाथवेज के बारे में बात करने वाले हैं. बट देर आर पाथवेज जो कि टेक्नोलॉजी लाइक बीटेक के थ्रू एज अ इंजीनियर करना चाहते हैं. बट आई वुड से कि ये कोर्स उन लोगों के लिए ज़्यादा अलाइन करता है जो बैचलर ऑफ अप्लाइड साइंस इन इंजीनियरिंग करना प्रेफर करेंगे इन द फ्यूचर. एम आई राइट? Yeah, according to me, you can go to any bachelor's, Mhm. either engineering or applied science. Applied science. You can transfer the credits from here, Mhm. right? And you can also do like you complete this program, do job for 2 years, 2 years, get your the PR PR first, yes. first, and then you apply further. Mhm. You will get admission into another program. That's true. You know what, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, फैमिली कंडीशन भी होती है और पर्सनली एक माइंडसेट भी होता है कि पर ईयर 18 to 19,000 फी है. तो पहले से डर बैठा रहता है कि नए सिटी में जाना है और हर साल इतना कमा के सेव रखना है ताकि हम कॉलेज को दे सके. तो काफ़ी चीज़ें होती हैं. यहाँ पे ये भी ऑप्शन है कि आप पहले आओ, 2 सेमेस्टर आप 2 years वाला प्रोग्राम पढ़ो, एंड देन इफ़ यू लाइक सेकेंड ईयर में जाने से पहले आप अपने कोर्स को चेंज कर दो, बिकॉज सेकेंड ईयर में ही मेजरली जो सब्जेक्ट जो होता है वो चेंज होता है, राइट? तो आप ये कर सकते हो कि आप सेकेंड ईयर में जाने से पहले आप चेंज कर लो प्रोग्राम. यू कैन ऑल्सो डू दैट. बहुत सारे लोग जो 3 years में होते हैं उनको लगता है कि नहीं ये कोर्स उनके लिए नहीं है, तो वो 3 years से 2 years में आ जाते हैं, राइट? ओवरऑल अगर हम क्रक्स देखें इस वीडियो का, हमने हर चीज़ के बारे में बात की. कोर्स लोड, PR के रास्ते, जॉब, हर चीज़ है इस कोर्स में. बस जो चीज़ ये कोर्स आपसे मांगती है वो है आपका टाइम और कितना पढ़ते हो आप इस कोर्स को. सो देखा जाए तो अगर आपको इस कोर्स में शेरिडन में आना है, पर्टिकुलरली शेरिडन का नाम बदनाम है कि बहुत ज़्यादा पढ़ाई कराते हैं. एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है. आपको फिर जॉब भी मिलती है, राइट? ओके, सो फाइनली हम रितिका का पॉइंट ऑफ व्यू जानते हैं और इस वीडियो को टुवर्ड्स द एंड लेके जाते हैं. व्हाट डू यू थिंक कि एक एज 12th के बाद या फिर इवन ग्रेजुएशन के बाद कुछ आना चाहता है तो व्हाट्स दिस, क्या मतलब पॉजिटिविटी क्या रखनी चाहिए और कितना बिकॉज यू आर टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस कोर्स, मतलब आपका खत्म हो चुका है ऑलमोस्ट, तो आप एक बेटर गाइड कर पाओगे. तो मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू मतलब इसलिए मैं पूछ रहा था. So what I would suggest, like for the 12th standard students, Mhm. like who are really into science, right? Science. जो जिनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है साइंस, right? तो उनके लिए program is so good, Mhm. and if they wanna continue, they can. And there are so I was exploring further universities. So that I can go and complete my bachelor's as well. Mhm. So first, like we agree together, like some people want to take experience, get PR and all things, Yeah. and then go further. Yeah, so I would say this is a good opportunity. And Sheridan, why Sheridan? It's I love this place because you get lot of things to get involved in, right? That's true. Yeah, and बहुत we चीज़ें haven't हैं talked about in this video, but I can talk on and on about this. Let's do one on campus tour. I'll keep you there in that video. What do you say? Are you agree with that? Okay. Yeah. Okay, so we'll try to make one Sheridan College in campus tour. So yeah, okay. I think it's a time to take a pause here. And alright, thank you so much, Ritika, for featuring in this video. I really appreciate your efforts. And like once again, thank you so much. So having said that, thank you so much for being till the end of this video. I really appreciate your effort as well. कोई question है? Comment down below.
this course I personally know this, so I can answer a lot of question. जो कि मुझे नहीं आएगा, जो कि मुझे किसी चीज़ में एक्सपर्टीज चाहिए होंगे, then I'll definitely pass the question towards the expert as well. And you know that, @Connect with Vikram, that's my IG handle. Thank you so much. See you in the next video. Till then, connect with Vikram.